Hello everyone. So it's been 14 years since I started my medical training journey. It was in 2010 that I joined a PMT coaching institute for my PMT preparations, and it is 2024 when I'm completing my intervention radiology fellowship at ILBS Delhi. So I have a 14-year knowledge and insights of what this whole journey to be a doctor is like, how we train as a doctor, what are the difficulties that we face when we are training as a doctor, and is medical field a right specialty for you? If you're coming into the specialty for making money, you see that doctors are rich, doctors life is lucrative, they have a lot of respect, I want to be a doctor. So please watch this video till the end. I'm sure you'll get insights on what a life of a doctor is. It's not so glamorous that it seems from outside. It's doctors are not so wealthy rich or so filthy rich as the people assume them to be. So there is a learning point for everybody, and I want to make this video for the 16-year-old myself who joined biology or who took biology in 11th इन होपिंग ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. उसने सोचा था कि यस मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, मैं रिच हूंगा. बट ऐसा नहीं है. एंड आई गिव यू इनसाइट्स कि क्या क्या चीजें हैं जो इस पूरी मेडिकल जर्नी में आपको ध्यान रखनी है. सो आई स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ एमबीबीएस एमडी एसआरशिप, and then I'll tell you what the future job prospects after completing your training is like. So let's start with MBBS. The MBBS is of 5.5 years. Now अब next आने वाला है, next is national exit test जो कि NMC इंट्रोड्यूस करने वाली है शायद. उसका ऑफिशियल नोटिस हैज नॉट येट कम. It came last year, but it was withdrawn by the NMC per se. So we are yet to see finalized कि next होगा कि नहीं. But in the current medical scenario, let's look at the subjects year wise. So first year में आपके 3 subjects होंगे, anatomy, biochemistry, physiology. And frankly, ये 3 subjects tough subjects हैं for a first year medical student who has just cleared PMT exams. एंड बहुत बार होता क्या है कि आप अभी भी वो पीएमटी के हैंगओवर में होते हो, आपको वही थोड़ा जोश रहता है कॉम्पिटिटिवनेस का कि यस मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, कि मुझे टॉप करना है क्लास में. बट फुल मार्क्स नहीं आते हैं किसी के एमबीबीएस में, ठीक है. यू बेयरली स्कोर 75%, एंड अगर आपके 75% आ रहे हैं एमबीबीएस में मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है. तो एक वो माइंडसेट शिफ्ट होता है फर्स्ट ईयर में व्हेन यू ज्वाइन एज अ मेडिकल स्टूडेंट. Now, second year MBBS मेरे हिसाब से is the most interesting year of MBBS. It has very interesting subjects like pathology, pharmacology, and microbiology. Pathology is one of my favorite subjects. It is the best subjects among these three subjects, and I would go on to say that it is one of the best, one of the better subjects in MBBS overall. Now, third year is actually the honeymoon period. Third year में easy subjects होते हैं. थर्ड ईयर में टाइम बहुत होता है आपके पास, थोड़े आप मेच्योर हो जाते हो, थोड़े आप बड़े हो जाते हो. So now you get to enjoy your life. You start going outside your college campuses, attending festivals, meeting new friends. You might get into a relationship. So third year is a honeymoon period of MBBS, and it is enjoyed by most medicos. Now come fourth year and you get big subjects like medicine, surgery, pediatrics, obs and gynae, psyche, derma, ortho, anesthesia, and radio. So the above four subjects are major subjects, so they constitute the bulk of your studies in fourth year, and the rest of the subjects are minor subjects which उनकी पोस्टिंग होती रहती है थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हॉस्पिटल रोटेशन होती रहती हैं. बट फोर्थ ईयर के एंड में करंटली एक फाइनल प्रॉफ आता है, थर्ड ईयर के एंड में भी एक प्रोफेशनल एग्जाम आता है. सो सारे ईयर्स फर्स्ट ईयर के एंड में एक फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर एंड में एक अलग प्रोफेशनल एग्जाम होगा, थर्ड ईयर एंड में एक अलग प्रोफेशनल एग्जाम होगा, एंड फोर्थ ईयर में एक अलग प्रोफेशनल एग्जाम्स होंगे. नाउ इंडिविजुअल ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आई हैव रिटन इट हियर, बट एम्स दिल्ली का थोड़ा डिफरेंट करिकुलम होता है जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. नाउ आफ्टर फोर्थ ईयर हैज गॉन ओवर, आपने प्रोफेशनल एग्जाम्स दे दिए, आप पास हो जाते हो, एंड इट इज आफ्टर दैट यू कैन कॉल योर सेल्फ अ डॉक्टर. दैट यस यूर डॉक्टर ऋषभ जैन. नाउ यूर एलिजिबल टू अटेंड इंटर्नशिप एंड सी पेशेंट्स. नाउ इंटर्नशिप इज फॉर 1 year. एक साल बाद आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, एंड देन फाइनली यू गेट द एमबीबीएस डिग्री एंड द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इंडिविजुअली एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर. सो ये 5.5 years की जर्नी के बाद you can actually call yourself a doctor and start treating patients even in your private setup. But most of the students, and आपको करनी भी चाहिए, that they opt for a post graduation or a specialization in the subject of their choice.
तो इसका एग्जाम होता है नीट पीजी का, विच उसकी प्रिपरेशन अगर मोटा मोटा देखे जाए तो 6 मंथ्स टू 2 ईयर की होती है. सो अगर आपने एमबीबीएस में अच्छे से पढ़ा है, सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, प्रॉफ में अच्छे मार्क्स आए, सो आई थिंक 6 मंथ्स, within 6 months you'll be able to get a good rank in NEET PG or Central Institute exams. बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे एमबीबीएस में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने ऐसी मस्ती मारी है, बस बेयरली प्रोफेशनल एग्जाम्स पास किए थे, तो मे बी आपको एट मैक्स 2 years लग जाए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 2 years और एटलीस्ट 3 years के बाद थोड़ा गैप ले लेते हैं प्रिपेयर के लिए. दे डू नॉट ड्रॉप एज मच आफ्टर 2 to 3 years, बट ऑन एन एवरेज इफ वी टेक अ रेंज, सो 6 months to 2 year प्रेप लोगों का लग जाता है नीट पीजी एग्जाम क्लियर करने में. इट इज अ टफ एग्जाम टू क्रैक. आई वुड से मच मोर टफर देन पीएमटी बिकॉज देर आर 19 सब्जेक्ट्स जो कि आपको पढ़ने हैं. Now, after you clear NEET PG, then you finally do your post graduation. So it is in two forms. So there is a 3 year course of MD, MS, or DNB. And if you're not selected for the 3 year course, which is a prestigious course, which is a good course, then there is a 2 year diploma course again in those specialized branches that are there. Now, some people after a 2 year diploma opt for a secondary DNB, which is again for 2 years. So, उनका post graduation पूरा 4 साल का हो जाता है. But most of the medical students join an MD, MS, or a DNB program, which is for 3 years. So, after your NEET PG, after your PG specialization is over, you can call yourself a specialist. So you are a pediatrician or an obstetrician or a radiologist like me, or an internal medicine physician like an MD medicine guy, etc., or a surgeon. Now, after you're done with PG, you have three options in total. So either you join a SRship, which is a senior residency, you join a DM, MCH, or a super specialization course like a gastroenterologist, a urologist, a neurosurgeon, a CTVS surgeon, or you join some fellowships after post graduation for some uh, extra training and some extra expertise. So, for example, I'm doing a fellowship in intervention radiology. Some people do a fellowship in bone marrow transplant, etc., etc. So SRship usually are up to 3 years. So some people join SRship for 1 year, 2 year, or 3 year. And SRship is kind of like a work experience itself. So MD में जो आपने पढ़ा, it is an extension of your MD. So you're working as a senior resident in the same department. Now, जो DM, MCH and DNB SS degrees हैं, these are courses per se. So these are 3 year courses again. So there is a 3 year course in gastroenterology, there's a 3 year course in cardiology, and इसका एक again entrance exam होता है. So अभी तक अगर आप DM तक पहुंच गए हो, so आपने 3 entrance exams दे दिए all India level पे, tough entrance exams, PMT, PG, and now DM exams. And after that, you can call yourself a super specialist. Now, some people do fellowship even after DM. So, let's say you have done a DM in gastroenterology after 10 or 12 years of studies. 12 years of study के बाद आपने DM gastroenterology की है. Some people further do a 1 or 2 year fellowship in, let's say, endoscopy, or let's say hepatology fellowship, etc. And then that fellowship is again for 1 year. Some fellowships are for 2 years. So again, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी भक्ति, उतना वो पढ़ता रहता है. सो मोटा मोटा अगर हम देखा जाए करंट सिनेरियो में, स्टार्टिंग फ्रॉम एन MBBS स्टूडेंट टू द एंड ऑफ योर DM, इट्स अ 12 year journey, given that you have not dropped for any exam. Usually the drop rates for preparation for PG and DM, let's take it a 1 year average. And 1 year में बोल रहा हूँ कि बहुत मतलब बहुत कंसाइज एंड कम ही ले रहा हूँ मैं ड्रॉप एवरेज ना. तो देन दैट गेट्स एक्सटेंडेड टू 14 years. सो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं डॉक्टर के लिए तैयारी करता हूँ, मैं डॉक्टर बन के पैसा कमाऊंगा, डॉक्टर बन के एकदम बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जाएगी मेरी, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. 14 साल, 12 से 14 साल लगते हैं आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में. या अगर आप केवल स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बनना चाहते हो तो 9 to 10 years आप मान के चलो. इट्स अ दैट लॉन्ग अ जर्नी. ठीक है. नाउ आफ्टर यू आर डन विद योर ट्रेनिंग, ठीक है, आप MD करा, आपने MS किया या DMMCH किया, then you start looking for a job. Now jobs currently are of three sectors. So one can be a job in your government sector, a second can be a job in a corporate hospital, and third category of jobs I've kept it as private jobs. Now these private jobs can be either a freelancing,
काइंड ऑफ जॉब, लेट्स से कि आप 2-3 हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हो, कि मॉर्निंग में मैं इस हॉस्पिटल में, इवनिंग में मैं इस हॉस्पिटल में, या फिर लेट्स से यू आर अ laparoscopic surgeon and आपके 2-3 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स हैं, यू गो एंड ऑपरेट इन वन हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यू ऑपरेट इन द सेकंड हॉस्पिटल, एटसेट्रा एटसेट्रा, और यू हैव योर ओन सेटअप, जिसका आई थिंक मोस्ट लोग को देख के लगता है कि ओ इनका ओन सेटअप है, इनका हॉस्पिटल है, दे आर सो रिच, बट let me tell you that those fraction of doctors are not in abundance, and I'll come to that. Now, the other two options are you join as a government, as a doctor in a government hospital. Now, these government hospitals can be central institutes like AIMS, PGI, JIPMER, NIMHANS, Sri Chitra, and there are other central institutes as well. Or these can be state hospitals and state medical colleges. Now, the salaries in central institutes are usually much higher than in state government hospitals, and that's why most people prefer to join a central government hospital if they want to stay in government setup. Now, the second option is you join a corporate hospital like Medanta, Apollo, Fortis, etc., etc. Now, if you're joining a government setup, the starting salaries are like that of a government, central government pay salaries, and the starting salaries are obviously less as compared to corporate hospital, or if you are owning your private practice, but it is a very steady stable job. धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है, द वर्क इज नॉट एज मच एज अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और सो मच हेक्टिक, एंड इतना लोड नहीं लेना पड़ता है जितना एक प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर को लेना पड़ता है. सो इट्स अ स्टेबल स्टेडी जॉब विद अ गुड पे. If you're trying to join a corporate hospital, then you have to climb the corporate ladder. So let's say at 40 years of age, आपका लोग नाम जानेंगे, then people will come आपके नाम से to the hospital, and the hospital might give you a share of the revenue that you're generating. Now, the third option is a private practice that I told you earlier. And इसमें if you're trying to build your own setup, को अपना hospital खोलना है, जिसका बहुत सारे MBBS students एक सपना देखते हैं कि हम अपना hospital खोलेंगे. So that requires a lot of capital, and that requires an entrepreneur sort of mindset and a risk-taking capability. कि okay, I am willing to take so much risk, and it is not so easy as it sounds. ठीक है, बहुत सारी सैलरीज आपको मैनेज करनी पड़ती है, कैपिटल आपको देखना पड़ता है, सो यू आर सॉर्ट ऑफ रनिंग द होल शो. सो मोटा मोटा माई होल पॉइंट इज दैट इट इज अ लॉन्ग रोड. ठीक है, 12 years ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग इज नॉट ईजी. अगर आप बाकी ब्रांचेस में देखो, यू लुक एट इंजीनियरिंग, you look at lawyer, you look at CA, their sort of professional training is, I think, 4 years, or at max if they're doing a MBA or a postgrad, to 6 and 7 years, but not more than that. After that they start their job. So as a doctor, you are going to start a lot late than your peers, and that comes with the financial side of it and a mental side of it, that you are 30, 33, you you still aren't married, or you are married and you have dependents and you're not earning so much as to support them. So you're sort of, forced to take up a job that may be a low paying job, but you have to take that job because you have to support your family. So you are starting a little late, and there's a lot and lot of hard work throughout this journey. The 19 subjects जो आप MBBS में पढ़ते हो, they are not so easy to remember, learn. Again, NEET PG is a tough exam to crack. There's a lot of competition. Again, there is exam at SS level. There is a lot of competition there. The working hours in the hospital as a resident are 12 to 14 hours in the first and second year, and gradually to 8 to 10 hours in the third year. So you are working for 10 to 14 hours minimum per day as a resident in MD or DM. So all I want to say is that all that glitters is not gold. जो हम PMT के तरह से डॉक्टर को सोचते थे कि अच्छा मैं एक हॉस्पिटल में गया, एक डॉक्टर ने मुझे देखा है, वो भगवान है एंड मुझे यही बनना है, एंड आई डोंट नो हाउ मच मनी ही अर्न्स, डॉक्टर्स तो करोड़ों में कमाते हैं, ये वो फलाना ढिमका. ऐसा नहीं है. बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिसके थ्रू आपको पास करना है. इवन आफ्टर योर ट्रेनिंग, there's a whole three set of opportunities that you have to choose between. ठीक है, उन सबके अपने अपने complications भी हैं. So for a 16-year-old boy or girl who is thinking of taking biology and wanting to become a doctor, my only advice would be that don't come for the money, don't come for the fame, only come if you have the willingness
to stay for 12 to 14 years as a trainee in this branch. And वो तभी हो पाएगा if your core instinct is to help patients. मतलब मनी भाड़ में चला जाता है जब आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ करंटली हेल है, तो द ओनली थिंग दैट कीप्स यू गोइंग इज द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. हो सकता है कि आपको वो कंपनसेट उतना ना कर पाए इन द इनिशियल ईयर्स, बट टिल from 20 to 40 years of age, the only thing that will keep you going is your job satisfaction. So please and please only come in this field if you have the willingness to help your patients. Don't come here for the money, don't come for the fame. That's it from my side. Thank you.